Good morning, students. In last session, we have seen preparation of financial statements, that is balance sheet and profit and loss account, under Schedule 3, Part 1 and Part 2, as per Companies Act 2013. So today we are going to start with managerial remuneration and dividend distribution rules. Today is the last session of preparation of financial statements. Tomorrow, on Wednesday, we are going to start with cash flow statement. So cash flow statement and then accounting standards. Some students are asking me about incomplete records. I will talk to Board of Studies faculty and I will tell you about an incomplete records. So first we will revise preparation of financial statement, balance sheet pro forma. So balance sheet pro forma, as you are aware, equity and liabilities, shareholder funds, share capital, reserves and surplus, non-current liability, long-term borrowings, deferred tax liability, other long-term liabilities, long-term provisions. Current liability, short-term borrowing, trade payable, other current liability, short-term provisions, and assets, property, plant and equipment, intangible assets, capital WIP, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax asset, long-term loans and advances, other long-term assets. Other non-current assets. Current assets, CIT, CSO, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. Short-term loans and advances, other current assets is a pro forma of balance sheet. After that, P&L, revenue from my operations, then other income, total income. Then you have raw material consumed, other expenses, depreciation and amortization, employee benefit expenses, and then other expenses, then total, and you will get net profit or loss for the period. Friends, remember, financial statement chapter is very easy. You have to just update your balance sheet and profit and loss account in trial balance itself after adjustments. Adjustments means for which you have to give two effects, and there are some adjustments which are only disclosure adjustments. So this is one of the very easiest chapter. At least try to complete posting part in exam to get out of 10 minimum 7 to 8 marks, though you are not tallying it, but at least you will get 6 to 7 marks for your posting part. So please don't skip this chapter in option. Now we are at the end of this chapter, that is manager remuneration. But before that, traditional rules of accounts. Good morning to all of you. Traditional rules of accounts. Yes, beta, personal, real, nominal. Debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, real account, debit what comes in, credit what goes out, and nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Friends, please say good morning in comment section. चलो जल्दी से आ जाओ. इस चैप्टर का इंडेक्स दे दीजिए. अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट में भूल गया था. यस, हर्षित जायसवाल, यू आर करेक्ट. आलोक शिवलानी जी, कशिफ अंसारी जी, बहुत दिनों के बाद एक स्टूडेंट नया दिख रहा है. नैनेश, आनंद, निकिता जी, यस बेटा, संकारन जी, नैनेश इंगड़े, ज्योति, हर्षिता, गुड मॉर्निंग बेटा, ऑल ऑफ यू. चलिए, so last part of this chapter. अच्छा, someone wants to see index of this chapter. चलो इंडेक्स देख लीजिए. इंडेक्स का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. फिर ले लीजिए इंडेक्स. नेक्स्ट, इलू 1, इफेक्टिव कैपिटल.
3, 4, 5. टेक स्क्रीनशॉट्स बेटा फटाफट. Some students are asking me to take TYK 5. Okay, no problem. We will discuss TYK 5 after break. So this is the last question. I hope you will write all these things today itself in your notebook. बेटा कांचन कुमारी. Yes, beta. Today we'll take TYK 5. चलो. कांचन कुमारी बोल रहे हैं कि व्हाट इज बिलियर्ड्स. बेटा बिलियर्ड्स आप गूगल पे कर देख सकते हो. आपको जो गेम आती है जो क्लब हाउस में आपके यहाँ पे रहती है, बिलियर्ड्स का एक टेबल रहता है जैसे. और एक बार आप देख लीजिए मतलब गूगल पे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा बिलियर्ड्स क्या है. स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है क्या? ओके, चलिए. मैनेजर रेम्यूनरेशन लास्ट पार्ट. Yes, how many students have watched my previous session? So, can you tell me what is the managerial remuneration overall percentage? Yes, in the comment section, tell me fast. What are the percentage, overall percentage, beta? Overall percentage बता दीजिए. बताइए फास्ट. Yes, overall percentage for managerial remuneration.
Write down managerial remuneration. Yes. Anandji, wrong. 11% into net profit under section 349. 11%. Very good. Everyone is saying 11%. Very good. अरे वाह, आजकल पास्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं, लगता है पास्ट लेक्चर्स. वेरी गुड. नाउ सीलिंग लिमिट बताओ. 11%. Yes, how to divide this? Yes, for manager beta, maximum limit. One manager, very good. %5. Manager plus full-time director, 10%. And part-time director, no manager or full-time director, so 3%. And if manager and full-time director, then 1%. Okay. Jyoti beta, you are wrong. If manager plus full-time director not better 6%, it's a 10%. पूरे टीम को 10% का लिमिट है. So this is the first part of managerial remuneration. So I say I will ask you about profit under section 349, how to calculate. So tell me how to recall this profit under section 349. Chalo, 11% of net profit, 5% of net profit. Everything is for net profit. So how to remember net profit beta? How to calculate net profit? So मैंने क्या बोला है आपको, नेट प्रॉफिट को कैसे याद करो? हैव यू वॉच्ड माय प्रीवियस सेशंस? नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करने को बोला है मैंने आपको. चलो जल्दी जल्दी बताओ. हाउ टू रिकॉल बेटा नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 349 कैसे याद करने का? हाउ टू रिकॉल इट? विच लिस्ट यू हैव टू रिकॉल? यस, नेट प्रॉफिट, very good. Exclusion list. Exclusion list. Income and expense. Income and expense. Very good. ज्ञानेश ने सबसे पहले बताया. Yes. Tell me. इनकम में क्या क्या नहीं आता? Very good, Harshit Jaiswal. What is to be not included in income that you have to recall?
तो जल्दी से बताओ इनकम में क्या इंक्लूड नहीं करना है। सो प्लीज गिव मी, दिस इज लाइक रिवीजन। हाँ, तो बेटा प्लीज आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। यूर बैच, मुझे पता है कि आपने बहुत तैयारी भी की है, पास क्वेश्चंस देख रहे हो। खुशी बेटा, यस बेटा। सी द एक्सक्लूजन लिस्ट। So write down in your last day revision notes and tell me over. Premium on shares or debentures issued or sold. So security premium, we never consider it. Profit on sale of forfeited shares. Very good. Profit of capital nature including profit of sale of undertaking. So बेटा capital nature का profit हम लोग नहीं consider करेंगे। जैसे कि capital nature means what? Sale of undertaking. Any asset, if you are selling it and more than book value, if you are getting the amount, that won't consider. Profit on sale of immovable property and any change in the carrying amount of assets and liabilities due to fair value. So revaluation gain we never consider. Revaluation gain, write down। चलो जल्दी से लिख लो जल्दी से एंड टेल मी ओवर। Income which are not to be considered। लास्ट डे रिवीजन नोट्स में लिखो फटाफट। चलो टेल मी ओवर यार, आफ्टर राइटिंग सिबालोक ने बोला है ओवर करके। अदर स्टूडेंट्स एटलीस्ट 7-8 बच्चों ने बोल दिया तो आई विल गो फर्दर। यस बेटा, आई विल गो अहेड। यस। एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स। इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स। एनी वॉलंटरी कॉम्पेंसेशन, एनी वॉलंटरी कॉम्पेंसेशन। बेटा 5 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लॉस ऑफ कैपिटल नेचर एंड रिवैल्यूएशन लॉस। So revaluation loss is also not considered while calculation of expenses which are not considered। तो बेटा expenses which are not considered में क्या क्या नहीं आएगा? इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स, कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस, लॉस ऑफ कैपिटल नेचर, एनी इवैल्यूएशन लॉस। राइट डाउन। वेरी गुड बेटा नैनेश, वेरी गुड।
Abdul is asking me about hypothecation of plant. Hypothecation of plant means beta when you are taking loan and if you are giving asset back as security. So it is called as hypothecation of plant. So taking loan and giving any security as asset, sorry, for mortgage. ओके सो गिरवी रखना, जो हम लोग गिरवी रखते हैं ना बेटा, तो उसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं. हाइपोथिकेशन ये प्लांट का नहीं होता है, नॉर्मली ये स्टॉक का होता है. मॉर्गेज ये प्लांट का होता है. सो अब्दुल भाई, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट वर्ड आया रहेगा. और बेटा दो तरीका होता है, एक नजरबंदी रखना और दूसरा होता है अब्दुल कि हम लोग प्लेज रखते हैं. Now, what is the difference between pledge and hypothecation? So, hypothecation में जो आपका स्टॉक होता है वो विदाउट बैंक परमिशन भी आप एक बेच सकते हो. मतलब बैंक का परमिशन लेने की जरूरत नहीं. मतलब बैंक क्वांटिटी कितना है वो नहीं बताती, किसको बेचना है ये नहीं बताती. आप सिर्फ क्वांटिटी डिटेल्स मेंटेन करके बैंक को भेज देते हो. एंड प्लेज में आपको बैंक के परमिशन के बिना क्वांटिटी भी नहीं बेच सकते. मतलब आप बेचना रहेगा तो पहले बैंक वाले को बोलने का, उसका आदमी आएगा और वो आपको परमिशन देगा तो ही आप माल बेच सकते हो. तो ये हाइपोथिकेशन और प्लेज का डिफरेंस है, वन लाइन डिफरेंस. पर ठीक है, इतना जरूरी नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में पता हो. सो हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल वर्ड्स है. पर मॉर्गेज इज फॉर इन ये जो होते हैं ना वो फिक्स एसेट जो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए मॉर्गेज वर्ड यूज करते एंड मूवेबल वर्ड के लिए प्लेज और हाइपोथिकेशन वर्ड यूज करते. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. ठीक है, चलो अभी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में लास्ट पार्ट पे आते हैं. सो लीज भी आपको मिल गया. इफ देर इज नो प्रॉफिट, इफ देर इज नो प्रॉफिट in that case, if your effective capital, now what is effective capital? So effective capital means paid up capital plus security premium plus reserves and surplus. See, security premium is also included here. In profit calculation, no, but in capital contribution, yes. Excluding revaluation reserve. Better revaluation reserve nahi kar sakte. Why it is not considered? Otherwise, revaluation reserve say capital will get increased. That's why we deduct revaluation reserve. Plus long-term loans, sir. Long-term loans and deposits, long-term borrowing. Yes, but it is considered. So in effective capital, it is considered. Minus investment. If your company is not investment company, because if minus investment, investment does not require better manager's thinking. You have, yes, contributed 1 lakh rupee and out of this you invested somewhere 30,000. So your effective capital in business is only 70,000. Okay, so we deduct investment. But suppose if my company is investment company, in that case, my investment is my skill as a manager. Okay, so I won't deduct investment in that case. So exception, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी तो यू कैनॉट डिडक्ट investment amount. If your company is not investment company, then you should deduct investment amount, accumulated losses and preliminary expenses if there. Okay, so effective capital means long term borrowings is also considered. And effective capital यदि आपका कंपनी का 5 करोड़ से, हाँ, now when this section is applicable, so still if you are not in profit, sir, if you are not in profit, still manager will get remuneration and 60 lakhs rupees बेटा. 60 lakhs rupees मतलब 5 लाख per month हुआ. Here it is 7 lakh per month. And 1 crore 20 lakhs is better. 1 crore 20 lakhs means better 1 lakh, 10 lakhs per month. Okay. इफेक्टिव कैपिटल 5 से 100 के बीच में होगा एंड 100 से 250 करोड़ के बीच में होगा तो ये, एंड 250 करोड़ के ज्यादा होगा तो 1 crore 20 lakhs plus 0.01% in excess of 250 crores. So write down effective capital के बारे में लिख दो. If less than 5 crores, remember 60 lakhs. 5 crores to 100 crores, remember 84 lakhs. 100 to 250 crores, 1 crore 20 lakhs, and 250 crores and above is 1 crore 20 lakhs plus 0.01% in excess of 250 crores. लिखो.
इफेक्टिव कैपिटल, बेटा कांचन कुमारी, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू और ड्यू दोनों भी अभी एज पर न्यू स्टडी मटेरियल ये अदर करंट लाइबिलिटी के अंडर ही आता है, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर ही आता है, इतना याद रखिए। Please watch my previous sessions of cash flow statements. We have to solve many questions of beta past examination questions in next 3 sessions. Take hard copy of past questions. What are conditions, beta? It must be approved by remuneration committee that if you are in loss, and you should not have any default in any repayment of loan, बेटा repayment of loan नहीं कर रहे हो और मैनेजर को remuneration दे रहे हो तो ये नहीं चलेगा. So these are the conditions. Okay, so ये conditions है. Next session will be theory session or cash flow statements. Theory I will give you in writing, don't worry, for last day revision notes. अरे बोलो ओवर, जल्दी से लिखो भाई. लिखा है क्या ये सब? ओवर. स्क्रीनशॉट मत लीजिए रे, लिख दीजिए लास्ट डिवीजन नोट्स में आनंद भाई. एंड लास्ट पार्ट इज इफेक्टिव कैपिटल. Don't get confused beta for effective capital. In effective capital we consider long term also. ओके, हर्षित बोल रहा है प्रीवियस बैच से कॉपी कर लिया था. इंडेक्स बुक नहीं होती है आनंद भाई,
इंडेक्स बुक के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसा सॉरी, हर इलस्ट्रेशंस के पहले मतलब कोई भी चैप्टर शुरुआत होने के बाद तुरंत हम लोग एक इंडेक्स बनाते हैं ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स। आनंद जी। ओके, चलो ओवर। सो इफेक्टिव कैपिटल होने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम illustrations. So this is the last part of this unit. चलिए, नहीं, one more part is there बेटा, that is dividend rules. चलो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। सत्रह क्वेश्चन से 10 11 बस 7 क्वेश्चंस करने आज, फटाफट हो जाएंगे। चलो, कैलकुलेट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर, ग्रॉस प्रॉफिट 40 lakhs. Then profit on sale of machinery. Profit on sale of machinery, net profit is given. Okay. So gross profit 40 lakhs we will consider. Profit on sale of machinery, cost is 8 lakhs and WDV is 4 lakhs. So here capital profit written down value is 4 lakhs, but you are selling more than 4 lakhs beta, 4,50,000. So profit on sale of machinery. Now see, maximum profit that you can consider is 4 lakhs. कितना कंसिडर कर सकते हो? 4 lakhs. पर आपने कितने में बेच दिया? मैक्सिमम वैल्यू ये आपकी 8 lakhs के ऊपर नहीं जा सकती है। 8 lakhs का डिफरेंस, WDV से 8 lakh का डिफरेंस कितना है? 4 lakhs. And your value is 4,50,000. See, so this is the new point. 8 lakhs is my cost. Okay. Till today, accumulated depreciation. Now WDV is given 4 lakhs. So 4 lakhs is my accumulated depreciation. So I cannot have profit more than my beta till today's depreciation. So now today's depreciation is maximum till today is 4 lakhs. And what is the selling? What is the profit that I am earning? 4,50,000. Remember, profit cannot exceed accumulated depreciation. And if it exceeds accumulated depreciation, then don't consider it. Excess amount. Don't consider excess amount. Now, this is the important point. Mark it as IMP point. Profit cannot exceed accumulated depreciation.
यू गॉट द कॉन्सेप्ट? देखो मैं वापस एक बार हिंदी में बताता हूँ। 8 लाख की मेरी कॉस्ट है, आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है? टिल टुडेज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज डब्ल्यूडीवी इज 4 lakhs, सो टिल टुडे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 4 lakhs. नाउ यू कैनॉट सेल योर प्रॉपर्टी एनी एसेट अबाउ इट्स कॉस्ट. ओके, सो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना होना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट जितना आज तक का डिप्रिसिएशन हुआ है. सो डिप्रिसिएशन से ज्यादा मेरा प्रॉफिट होएगा तो वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा. सो हियर आई हैव टू एक्सक्लूड 50,000. एक्सक्लूड 50,000. ओके, एंड 4 लाख अलाउड है. यू कैन डिडक्ट मैक्सिमम 4 lakhs फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट. You can deduct maximum 4 lakhs from gross profit. You do not consider 50,000. Subsidy from government, beta, include income. Salary and wages, deduct it in section 349. Repairs to fixed asset, deduct. General expense, deduct. Compensation for, this is not voluntary compensation, for breach of contract, deduct. Depreciation we will assume as per Companies Act, deduct. Loss on sale of investment cannot be considered. Yes, so ये deduct नहीं होगा because it's an investment, not business. Regular profit. Expenditure on scientific nature, no, it's a capital nature, so exclude. Both are not considered. Exclude के लिस्ट में आएगा. Debenture interest, yes, deduct. Interest on unsecured loan, deduct. And these both are not considered. Provision for tax and proposed dividend. So your answer, 40 lakhs minus 4 lakhs plus 1 lakh minus 150 minus 50 minus 40 minus 25 and minus 240 minus 75 minus 15,000. Yes, beta. There are two ways. 4,000 minus 400 plus 100 minus 150 minus 50 minus 40 minus 240 how much profit you are getting? Oh, sorry. This is plus beta. Sorry. This is plus. 400 is plus. गलती से हो गया मेरे से. ये 400 प्लस था, गलती से मैंने माइनस कर दिया. प्रॉफिट वी हैव टू ऐड ना. प्रॉफिट वी कैन कंसिडर ओनली मैक्सिमम अप टू 400. सॉरी, 400 ऐड कर दो तो 800 ऐड कर दो. अभी फाइनल अमाउंट बोलो. प्रॉफिट बेटा वी हैव टू कंसिडर 400. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, उसके लिए जो आपने पेमेंट किया होगा.
चलो, I will give you in writing this answer, beta, both ways. Both ways. Write down calculation of managerial remuneration. Alternative 1, serial number, particulars, rupees. A, income. Gross profit 40 lakhs. Profit on sale of machinery 4 lakhs. Next, subsidy from government 1 lakh. So total 45 lakhs. B, expenses. Salaries and wages 1,50,000. Repairs 50,000. General expense 40,000. Next is compensation 25,000. Depreciation, we will assume as per Companies Act 240. Debenture interest 75,000. Interest on loan 15,000. Sub total 595. C, net profit under section 349. ₹39,05,000. D, managerial remuneration 11% into C. 429,550. This is presentation 1. 429,550. You have one more presentation. Yes, बेटा, over. चलो जल्दी से बताओ, over. बेटा, ज्ञानेश,
पूरा प्रॉफिट एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, बुक वैल्यू के ऊपर का प्रॉफिट एक्सक्लूड किया जाता है. सो दिस इज अ न्यू प्रोविजन जो आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा. ये प्रोविजन याद रखना. यस, ये प्रोविजन याद रखना बेटा. यस. नाउ ऑल्टरनेटिव 2. Second alternative for this serial number particulars rupees. A, net profit. Given है ना बेटा net profit. What is net profit is given in the question 10 lakh 70,000. B, add back जो expenditures है. First one, चार expenditure है which we have not considered. You can see here loss on sale, expenditure on scientific research cannot be considered, and provision for income tax and proposed dividend. तो ये चार ही आइटम लिखेंगे. सो दिस इज रिवर्स प्रेजेंटेशन. यस बेटा, ये नेट प्रॉफिट से उल्टा जाना है. जो नहीं चाहिए उसको एड बैक करेंगे. इट्स लाइक योर इनकम टैक्स पीजीबीपी. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,000. Roman 2, expenditure on scientific research 2,50,000. Provision for tax 16 lakhs. $10 lakhs. Subtotal B. $8,85,000. C less capital profit on sale of machinery in excess of book value 50,000. D, profit under section 349. A plus B minus C. $39,05,000. And E, managerial remuneration 429,550. Managerial's remuneration 429,550. Okay. So how many alternatives बेटा? Which alternative is preferable? आपको कौन सा इजी लगा? 1 और 2? 1 और 2? जल्दी से बताओ. यस बेटा नैनेश, वेरी गुड. कौन सा ऑल्टरनेटिव इजी लगा बताओ ना जल्दी से. जल्दी बताते ही नहीं आप लोग. बेटा कैपिटल प्रॉफिट का एक्सेप्शन है वो.
सम स्टूडेंट्स दो बोल रहे, हर्षित बोल रहे दो, श्रुति बोल रहे दो, प्रियंका, हर्षिता, अरुण वन बोल रहे, और आलोक बोल रहा है दोनों इजी है। ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस है बेटा। मुझे पूछोगे तो वन ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, पर आईसीआई सेकंड से जाती है नॉर्मली। तो यस, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू फिनिश इलस्ट्रेशन नंबर 11। ब्रेक में मैं अभी हम लोग मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ दे के जाता हूं। चलो, यू सॉल्व 11, 12 एंड 13 टिल 8:20। 8:20 को हम लोग मिलेंगे, 8:20 को मिलते हैं। 20 मिनट आपको दे रहा हूं मैं सॉल्विंग के लिए, 10 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक। ओके, 10 से 15 मिनट सॉल्विंग एंड 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, चलो। सो टिल दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और हम लोग मिलेंगे 8:20 को। चलिए, थैंक यू। 15 मिनट सॉल्विंग को दे रहा हूं, 15 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा आपका। तो आई विल मीट यू आफ्टर, कितना मिनट से 7:53। सो 20 मिनट दिए, 20 से 22 मिनट दिए आपको, 8:20। सॉल्व, चलो फास्ट। ब्रेक ले लो तब तक, 8:20 को मिलते हैं। ब्रेक ले लो ना। ओके, 8:20 को कॉल कीजिए नहीं तो एक बार। हाँ, वो सॉल्विंग के लिए टाइम दिया उनको।
इलस्ट्रेशन 12 में आ जाइए फटाफट. यस, व्हाट इज द आंसर बेटा? Illustration 10, 12. Yes, anyone? Now I won't give you presentation. We will solve on question itself. Yes, beta Nanesh, if we do not solve this question, it might be a chance to lose 2 marks in exam. Yes. Anand ji bol rahe, so it takes time to watch previous batch sessions and record all information and practice it. Yes, I know, but Anand ji, so that's why I am taking very slowly all these questions, and I'm not forcing to watch my so to solve all these previous examination questions. We are solving it in the class itself, and I'm trying my best to give you revision of this chapter also. Okay, but in this batch I want to cover maximum questions, and you can see here there are many questions which are very new in exam. चलो 12 का आंसर कोई देगा मुझे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अच्छा, पहले 11 नंबर, सॉरी, पहले 11 नंबर. नेट प्रॉफिट है, गलती से नॉट प्रॉफिट हुआ है. नेट प्रॉफिट, the net profit considering following items: depreciation, preliminary expenses, provision for tax. Question: director fees, okay, bonus, profit of sale, PPE, original cost and WDV, provision for doubtful debts, scientific research, managing director's remuneration paid, allowable depreciation 3,50,000, bonus allowed 1,80,000, provision for doubtful debts not required, rate of managerial remuneration 5%. Net profit 20 lakhs. Okay, so this is alternative 2 we have. Depreciation add back, because we will deduct 3,50,000 depreciation and not 4 lakhs. Preliminary expenses add back. Tax is not allowed, add back. Director fees considered. Bonus add back. Yes, bonus beta. As per bonus act 1,80,000, so that is deductible. So bonus add back and 1,80,000 will be deducted. So accumulated depreciation is 1 lakh and 1,55,000 is a profit on sale. So कितना add back करोगे? So you won't consider, sorry, accumulated depreciation कितना है? 90,000, sorry. Accumulated depreciation 90,000 and 1,55,000, so 90,000 तक allowed है and 1,55,000. So 155 minus 90, 65,000 is not allowed. So 65,000 deducted. Okay. So more than accumulated depreciation not allowed. Provision for doubtful debts add back. Scientific research add back.
and manager remuneration that we are calculating. So what is given in the question is also added back. Okay. So what is the answer? 2000 plus 400 plus 100 plus 3100. 80 is ignored. Bonus 150 minus 65 plus 90 plus 200 plus 300 minus 350 minus 180. So I am getting the answer. Yes. How much answer, beta? 57,45,000 into 5%. 287,250. आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर कितना आया बताइए? कितना आया? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 90,000 था तो ऐड बैक किया. Yes. So I am getting the answer 2,87,250. चलो, come to next question. Yes. Now everyone better clear with this concept. Suppose if profit on sale of PP आता भी है एग्जाम में, so you will be prepared. ऐसा नहीं होगा कि आपको ये पता ही नहीं था. ओके, सो स्टडी मटेरियल में सेम प्रॉब्लम नहीं थे. चलो, टेल मी 12 नंबर का आंसर. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो बेटा हम लोग इसमें राइट डाउन ऑल्टरनेटिव 1 से जाएंगे. ऑल्टरनेटिव 1. आई होप एवरीवन हैज हार्ड कॉपी. प्लीज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके आना. नॉट करेक्ट बेटा आलोक. सो प्लीज टेल मी योर आंसर बेटा, ऑल ऑफ यू. आपका आंसर क्या है फॉर इलस्ट्रेशन 12? कैन यू टेल मी इलस्ट्रेशन 12 का आंसर? एवरी वन ऑफ यू. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐड, सब्सिडी ऐड, एमरेस्ट हुआ है, इंटरेस्ट कीजिए उसको. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐड, ट्रांसफर फीस ऐड, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 50,000, 55 minus WDV 30, so 25 accumulated depreciation, and profit on sale of machinery is also 25. So beta, it is allowed. Full amount is allowed. Add up to 25,000 allowed. Accumulated depreciation is also 25. Profit is also 25. So up to accumulated depreciation allowed. इतना याद रखो. So accumulated depreciation allowed है. Suppose if profit is 30,000. Profit is 30,000. So only 25,000 हमने ऐड किया रहता. 5,000 हमने इग्नोर किया रहता. Alternative 1 में.
ऑल्टरनेटिव 2 में गए रहते, ऑल्टरनेटिव 1 में गए तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अलाउड है, एंड ऑल्टरनेटिव 2 से गए तो लेस कर देंगे. क्या लेस करेंगे? एक्सेस देन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. सो यू कैन राइट दिस. ऑल्टरनेटिव 1 से गए तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जितना अलाउ करेंगे, एंड ऑल्टरनेटिव 2 से गए मींस रिवर्स कैलकुलेशन, तो एक्सेस देन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इग्नोर करेंगे. वी विल इग्नोर मोर देन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. ऑल्टरनेटिव 1 वर्सेस ऑल्टरनेटिव 2. ऑल्टरनेटिव 1 में एक्सेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इग्नोर ही करेंगे, एंड ऑल्टरनेटिव 2 में वो लेस करेंगे. ठीक है. एक्सपेंसेस अलाउड माइनस डोनेशन अलाउड, अलाउड डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट लेस, कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, इग्नोर करेंगे इसको. डेप्रिसिएशन 475 340, 475 340. Provision for taxation, general reserve, and all are ignored. Okay, so take on Calci. 40,25,350, 360, sorry. $720 plus 25,000. So 40,25,360 add and 25,000 पूरा ऐड किया, माइनस 822,540, 25,500 लेस, 66,760 लेस, 31,240 लेस, 42,530 लेस, then 475 340 less, 28,35,000, 28,35,370. Net profit under section 349. One director 5%, two whole-time directors 10%, and 11%. So into 5%, and 11%, 3,11,891. Yes. Getting same answer, beta. Beta, depreciation allowed as per Companies Act. So हर्षित, depreciation में Companies Act के हिसाब से जितना होगा वो allowed है. Yes. But what is the amount that you paid manager remuneration? 285 350. 285 350 is not allowed in first two cases. You have to write this, beta. You paid 285 350
which is not allowed under 1 and 2, but allowed as per Roman 3. Okay. So 285. So ये आपको लिखना पड़ेगा managerial remuneration rupees 280 कितना था 285 350 सॉरी हाँ is exceeds limit under 1 and 2, so not allowed, but allowed under Roman 3. Okay, so as per Roman 1 and Roman 2 allowed નથી, but Roman 3 allow करे छे. Okay, so managerial remuneration ये किसके अंडर अलाउ होगा 1 and 2, इसमें not allowed because limit is this and you are paying 285 350. It will give you 2 marks. हाँ, ये लाइन लिखना जरूरी है. Managerial remuneration exceeds this limit. तो ये लाइन लिखना जरूरी है. Company has to obtain approval. चलो. Now solve 13 number. Effective capital. Yes. November 2019. Issued, subscribed and paid up capital. So effective capital, we add capital plus long-term borrowings. Share suspense account represents application money received. Application money received pending allotment. Not allowed. Security premium allowed. 3,90,000 में से revaluation reserve 390. 3 lakhs. So 90,000 allowed. 90,000 we will add. Revaluation reserve we ignore. Already taught you. 12% debentures add. Public deposit add. Trade payable add. Or no? No, because this is a short term. Short term is not allowed. Not considered. Not considered short term. Investment, if your company is investment company, then ignore. Ignore if investment company. And P&L debit balance less. चलो लीजिए कैलसी पे 3000 plus 192,000 plus 100 plus 90 plus 13,000 plus 740 minus 15,000 minus 3050. 180 क्या गड़बड़ हुआ 3000 19,200 कैपिटल रिजर्व कितना लिया मैंने गलती से 100 लिया सॉरी 100 करेक्ट है ना सिक्योरिटी प्रीमियम Okay, so 18080. What is the effective capital? 18080. And if investment company, you won't deduct 15,000. So add 15,000. 33, 3 crore 30 lakh 80,000 in this case. So no investment company. 18080
and if investment company 33080. Chalo. But a presentation do. Yes, should I give you the presentation effective capital ka, or you will do as per study material? Please tell me. 13 number question. Yes, you tell me it in the comment section. Okay, Vishnu ji. I am taking revision only in Hindi, beta. Otherwise, maximum thing in English. Okay. So, can you tell me, should I give it in the writing or you know the format? Study material, na? Effective Harshit ji. It's very simple. Presentation is like computation of effective capital. Yes, he wants the presentation. I will give you how to present. Serial number, then beta Harshit, particulars. बीच में लिखेंगे प्रभात लिमिटेड is divided in two parts, non-investment company and second one is investment company. A, share capital. So here liability side. B, assets में से less investment and P&L. And C, and here you will take subtotal, all liability side plus public deposit, and then effective capital. A minus B. So this is a presentation. Yes, beta Harshit, can you do this? So this is computation of effective capital. Harshit, understood? Effective capital presentation. Yes or no, beta Harshit? And similar question is there in study material, I think. Chalo. Question number 14. Yes, beta, which alternative you want? I will go by alternative 1. November 20 question. Beta 5 marks. Hath ke 5 marks. Very easy question. Buy balance brought down. Ignore. Last year profit. Buy subsidy. Add. Balance from trading account. Add. And subsidy. Add. Administrative expense less. Advertisement expense less. Salesman commission less. Director fees less. Interest on debenture less. Managerial remuneration ignore. Depreciation is allowed, but as per Company Act 651/750. So ignore this and less 651/750. Provision for taxation, general reserve and ignore. So take on calci 42, 53, 650 plus 3,50,000 minus 596,400 minus 110,500 minus 105,550 148,900 minus 56,000 minus 651,750. I am getting answer 29,34,550.
And now you have three options. One time direct, whole time director 5%, only manager plus whole time director 10%, and third one 11% if manager plus whole time director plus part time director. You have to write this, huh, beta? Because ICA asks you limits. So you have to give three situations, then only you'll get 5 marks. So into 5%, here it is 146, 728, 10%, 293, 455, and 11%, 322, 801. So beta, managerial remuneration is allowed 305,580 only in third case. Only in third case. You paid 305,580. You have to write this sentence also. Managerial remuneration is not allowed. Kitna tha? Managerial remuneration 305,580 is not allowed in 1 and 2, but it's allowed in number 3. But it's allowed in situation 3. You have to write all these three situations, then only you will get marks. 5 mark. Chalo. So you got the same answer. We will move to next question. 15 number. See beta, question number 15 is not is partly question which is printed beta. Sorry. So depreciation, write down depreciation as per schedule 3, schedule 2, sorry, rupees 5,15,675. Calculate MD remuneration. Depreciation is 5,15,675. ऑल्टरनेटिव 1 से जाते हैं. ऑल्टरनेटिव 1 ओनली. सो टेल मी द आंसर. चलो आंसर दीजिए अभी. आंसर दीजिए.
Yes. What is the net profit? Net profit is 26 lakh 73,190. Who wrote very fast? Muhammad Aslam. And into 11% is the answer. 294. Beta 11% is the answer. 294,051. Maximum 11%. You can write whole time director 5%. Yes, you can write different scenarios. So I'm not going to cover this now. You already know this answer. Yes, Harshit, you are correct. Yes, very good. 16 number. X Limited is non-investment company. The company provides you the following information. Paid up capital, preference share capital, revaluation reserve is not allowed. 70 we will add. Security premium we will add. Long-term loan we will add. Deposit repayable after 1 year add. Ignore minus minus. Maximum remuneration. Okay. Maximum remuneration. So effective capital is बेटा 100 lakhs आया. बेटा 100 lakhs and at 100 lakhs मतलब 1 crore 20 lakhs per annum. थर्ड स्लैब में जाएगा. एग्जैक्ट 100 lakhs. Below 100 lakhs, बेटा second slab. 100 lakhs up to 250. So this is a third slab. Exactly at 100 lakhs third slab. याद रखना. Exactly at 100 lakhs it's a third slab. So exactly at 100 lakhs, you can see here, it's less than 100, sorry, crores. Rupees in crores, yeah. No, beta, it's wrong then. 100 lakhs matlab 1 crore. So 60 lakhs is the answer. 60 lakhs. It's not crores. It's lakhs. Okay. 100 crores means 100 lakhs means 1 crore. 1 crore is in first slab. अरे बाप रे, ये तो एग्जाम वालों की भी गलती हो गई फिर. सजेस्टेड में भी शायद से गलत दिया है फिर. 1 करोड़ है ये. बेटा नॉट 120 lakhs, इट्स अ 60 lakhs. 100 करोड़ होना चाहिए था. क्वेश्चन इज लाइक करोड़. 100 lakhs means 1 crore. So answer is 60 lakhs. I think in suggested you have wrong answer. Suggested में wrong answer है.
And last one. Now, beta, in last exam, this question is of 5 marks. Now there is a confusion. Okay. Net profit, there is no option, beta. It is alternative 2. Now I will match my answer with suggested answer. But if you ask me personally, so according to me, I will ignore repairs because we are following accrual concept of accounting. And as per accrual, this is the considered, beta. Accrual के हिसाब से consider ये करना है. But now I have to match answer with ICI. Personally speaking, beta, we have to follow accrual concept. 9,40,000 is before tax and remuneration, but after depreciation. So 9,40,000. Now this is depreciation which is provided in the books, which is not allowed. So this is add back because this is alternative 2. We do not have any other option. And allowable will be deducted. And what about repairs? तो repairs बेटा मैं इग्नोर करूंगा. According to संकेत सर, repairs को इग्नोर करना चाहिए. But what IC has done, repairs को add back किया accrued and less किया paid. But no beta, my suggestion, ignore this. According to me, answer is, sorry, पहले मैं ICI के हिसाब से बताता हूं. 940 plus depreciation add back. So 940 plus 405 plus 35 minus 340 minus 25. So as per ICI, and this is ignore because this profit is before income tax. Okay. So ICI is getting answer. You can check here. The answer is 10,15,000. As per ICI, 10,15,000. But if you ask me, according to me, I will ignore this 35,000. According to me, I will do the adjustment only for depreciation. 940 plus 405 minus 340. So according to me, answer is 10,05,000. I won't consider beta. क्या नहीं consider करेगा मैं? Repairs, because accrual concept we are following ना. So ये पेड बेसिस पे किसने किया? तो पेड बेसिस पे आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में 10,05,000 है, 15,000 है, बट अकॉर्डिंग टू मी 10,05,000. So 10,15,000, I will go with ICI answer now into 5%, then 10%, and then 11%. So managerial remuneration, you have to calculate in the same way. What is your thinking, beta? Do you think repairs paid basis पे लेना चाहिए? What do you think? Yes, repairs paid basis. According to me, it's not correct. आपका थिंकिंग बताइए.
बेटा accrual concept, see Pranev, we are following accrual concept of accounting. So repairs, see 35,000 is accrued and 25,000 you paid during the year. अभी इनकड़ ही दिया है, पेड होता तो फिर 35,000 था, अभी इनकड़ है। सो ठीक है, ऐसे के आंसर के हिसाब से ही जाओ, चलो ठीक है 35,000। कुछ मतलब क्लैरिटी नहीं है, प्रोविजन एंड इनकर्ड इसके बीच में डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बनाने वाले ने बनाया रहेगा। ओके ठीक है, यू गो विथ ऐसे आंसर ओनली, क्योंकि प्रोविजन एंड एक्रूअल, इनकर्ड मीन्स एक्रूड। अभी ये क्या बोलना था बनाने वाले को, वही नहीं समझा। ठीक है, जो है, सो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। So remember, if any provision for repairs is given and actual expenditure is given, so you will consider actual expenditure which is incurred, okay? And we won't consider provision for repairs. नहीं प्रियंका, अभी क्या है, क्लियर पिक्चर ही नहीं है। व्हाट इज दी, क्या जिसने क्वेश्चन बनाया उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। Provision means the payable. Okay. Provision, accrued, outstanding, all are similar words. Okay. So, but ठीक है, अभी यहां पे provision for repairs we will deduct and sorry, add back, and actual expenditure incurred we will deduct. We will consider this one. So, in original P&L, they considered 35,000. So we have to add back this because we are going by net profit approach. So उल्टा जा रहे, so net profit में 35,000 add back करेंगे, and what is we required amount 25,000. So that will be deducted. Okay, 35,000 हमें नहीं चाहिए, so we will add back because we are following alternative 2. एंड ऑल्टरनेटिव 1 फॉलो किया रहता ग्रॉस प्रॉफिट ऑप्शन, सो 35,000 को इग्नोर करके डायरेक्टली 25,000 को लेस किया होता। सो एड बैक 35,000 एंड डिडक्टेड 25,000। ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो वी वांट डेप्रिसिएशन, सेम लॉजिक लाइक डेप्रिसिएशन, वी वांट डेप्रिसिएशन 3,40,000, वी डोंट वांट 4,05,000। सो 4,05,000 ऐड करेंगे एंड 3,40,000 लेस करेंगे। इफ यू आस्क मी, प्रोविजन और इनकर्ड में उनको क्या डिफरेंस लेना था, वो अभी भी मुझे समझा नहीं है कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा था। सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन देने के केस में ये हो गया कि ऐसा एडजस्टमेंट पूरे इसमें नहीं था अभी तक के क्वेश्चंस में, सिर्फ ऐसे ने 22 में एक नया क्वेश्चन ही जनरेट कर दिया। ओके चलिए, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है प्रणय। ठीक है, चलो रहने दो, आईसीआई का व्यू हम लोग फॉलो कर लेंगे। सो फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन इन 2022 इन लास्ट एग्जाम। नाउ बेटा, यस बेटा, अब्दुल यू कैन डायरेक्टली कंसिडर 10,000। चलो अभी हम लोग टीवाई के 5 में आ जाते। क्वेश्चंस, मेनी स्टूडेंट्स आस्क फॉर टीवाई के 5। लास्ट क्वेश्चन,
बेटा इंश्योरेंस क्लेम कंप्लीट कर लेना। मोहम्मद असलम जी। TYK5। Should I give you only explanation part और इन राइटिंग आंसर? बेटा राइटिंग में तो बहुत टाइम जाएगा, राइटिंग में बहुत टाइम जाएगा। यस, यू वांट ओनली वेयर टू ट्रांसफर? शुड आई राइट फुल? राइटिंग में बहुत टाइम जाएगा TYK5 में। और यू वांट ओनली बेटा स्टडी मटेरियल में, बेटा इसी चैप्टर में है ना कविता, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। Please, next chapter is very important one, cash flow statement from your exam point of view also. लोग पूछ रहे हैं एडवांस अकाउंट्स आप ही लोगे? नहीं बेटा, एडवांस अकाउंट्स बाय अनदर फैकल्टी। एडवांस अकाउंट्स अभी मुझे फाउंडेशन का अकाउंट्स है और इंटर वन का अकाउंट्स है। यदि आपको इंटर एडवांस का मेरा अकाउंटिंग चाहिए तो आप पुणे ब्रांच से कांटेक्ट करना, ICI की ब्रांच है, सो दे विल टेल यू, पर वो हिंदी में रहेगा। एडवांस अकाउंट विल बी इन हिंदी। ओके चलो TYK5। Ring Limited was registered with a nominal capital. So nominal capital is for presentation. Only for presentation. Authorized capital. So presentation, authorized capital. You can write over there, authorized capital. Note 1, it's a presentation, rupees 10 lakhs. Trial balance is given, building. So beta, building is property, plant and equipment. I think you have provision for depreciation. So this is accumulated. So you can write over here, it's a gross block. It's a gross block. Closing stock of finished goods. So closing stock of finished goods, it's on asset side beta. Finished goods ka hai. So write down it is finished goods. Please write down. I will explain you afterwards. So finished goods hai. Closing stock. Loose tools is also your inventories. Under inventories, so loose tools, IMP1, loose tools. Purchase of finished goods. So beta, we will write it under P&L. P&L, purchase of finished goods. Purchase of finished goods. And but P&L में we have to write consumed. क्या लिखना है? Consumed. So this is again IMP. Purchases, IMP beta. We don't write purchases, we write consumed. Okay. So P&L में consumed आएगा. IMP don't write purchases, but it is helpful to calculate consumed. So most important part, how to calculate consumption. Yes, we'll tell you in short time. Salaries, employee benefit expenses, employee benefit expense,
Director fees, write down under rent, under other expenses, depreciation, separate head, you can write separate head. Bad debts. Now bad debts, beta, we will prepare account. Okay, account. Bad debts, RDD account. Reserve for doubtful debts account. Again, bad debts is IMP in this question. Bad debts IMP. Investment directly, non-current investment. Non-current investment. Okay. Interest accrued on investment, beta. Other current assets. Other current assets. IMP first time. Other current asset. We will prepare separate item. Please IMP वाले सब mark करके रखना. Debentures interest. It's a finance cost. Accrued means receivable, beta. It's a receivable. So other current asset. Accrued means receivable. It's a balance sheet item. It's a P&L item, finance cost. Advance payment of tax. Advance tax, beta. Again, IMP. Short-term loans and advances. Short-term loans and advances. IMP. Sundry expense, other expense. Debtors, trade receivable. And bank is cash and cash equivalent. Bank is cash and cash equivalent. Sales revenue from operation. Outstanding expenses, other current liability. Other current liability, outstanding. Provision for doubtful debts, IMP account. Provision for doubtful debts, IMP account. Equity share capital, note 1. Note 1. General reserves and P&L, note 2. Creditors, trade payable. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ग्रॉस ब्लॉक में से माइनस हो जाएगा. 14% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स accrued but not due. Other current liability. IMP. Other current liability. Interest on investment, other income. Other income. You can show other income. And most important, unclaimed dividend. Other current liability. Other current liability. Once again, important. You are required to prepare P&L. Closing stock is more than opening stock. Okay. So closing stock is equal to opening stock plus 1,60,000. Now what is the value of closing stock? 1,80,000. 1,80,000. Therefore, you can write opening stock is equal to 20,000. Opening stock is equal to 20,000. Write down. Are you getting this concept? Yes, tell me. Are you getting this concept?
See, now, how to present this answer? See, beta. Okay, sorry. Now, please change the question. Here it is given purchase finished goods. Write down consumed finished goods. It is not purchases, it is consumed, because in trial balance, opening and closing are missing. So this is not purchase. This is consume. See, I will tell you the exact meaning. If you are writing raw material, then we always write to consumed in P&L. This is very, very important chart. Please, 5 marks. Beta, it's very IMP. And if we are writing finished goods, in P&L, we have to write purchases separately. And so what is consume? Consume means opening raw material plus whatever purchases of raw material minus closing of raw material. Okay, it is called as consume. So in P&L, we always write consume. And for finished goods, we write purchases of finished goods. And then we consider difference between opening and closing stock. If opening is greater than closing, so debit is more than credit, so we will write positive sign. We will give positive sign in P&L because we are writing in expenses column only. Logic, क्योंकि हम लोग expense में ही लिख रहे हैं. Logic, expenses. Credit is more. And if opening is less than closing, means debit is less than credit, then which sign beta? Negative sign. So positive sign dena hai. So for finished goods, we never write consumption. For finished goods, we write purchases separately and difference between opening stock and closing stock. Okay. This is most important concept. Many students are not getting it. So raw material, we write consume, but for finished goods, we write opening and closing and purchases. Now, in this question, consumption is given, beta. Now ICM में change करवा दूंगा इसका question. Consumption of finished goods is given. What is given? Consumption of finished goods in this question. So, yes, beta. So, finished goods, opening stock plus purchases minus closing stock is equal to consumption. This is a formula. Many students are not getting this concept clearly. So, beta, consumption 4,20,000. And what is opening stock you calculated? 20,000. And what is purchases? Not known. And what is closing stock? 1,80,000. Therefore, purchases is equal to 4,20,000. ये दोनों का डिफरेंस माइनस 1,60,000 उधर जाके हो जाएगा प्लस 1,60,000. So what is purchases value? 420 plus 160. So you are going to write 5,80,000. What you are going to write? 5,80,000 because you will convert it into 5,80,000 and changes in inventory negative 1,60,000. So ultimately see the effect. 580 plus minus 160. So ultimately it's a 420. 580 minus 160, ultimately 420. So 420 का breakup लिखा जाएगा. 420 का breakup 580 in purchases and changes in inventory 160. I will show you the answer.
580 purchases. So instead of writing 420, what are you going to write? See the answer. 580 for finished goods minus 160. Ultimate effect 4,20,000. But breakup you are going to write. And what is given in the question? Finished goods consumed during the year. And we want finished goods ka purchases and opening and closing stock separately changes. Raw material, we directly write opening plus purchase minus closing. So raw material hota. If this is a raw material, we will directly write 420. But this is a finished goods. So we will write 580 separately and 160 separately. Most important concept in this question. Are you getting this concept? अभी मैंने ब्रेकअप भी करके दिया. रॉ मटेरियल होता तो डायरेक्टली 420 लिखा रहता, पर फिनिश गुड्स होने के वजह से 580 सेपरेट लिखना पड़ेगा एंड 160 निगेटिव में लिखना पड़ेगा. सर वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल. इट्स अ फिनिश गुड्स. क्लियर है? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो जल्दी से बताओ. व्हाट यू अंडरस्टूड बेटा? चलो जल्दी से बताओ. यस बेटा, नैनेश ने बराबर लिखा है. फिनिश गुड्स नेवर कंज्यूम. चलो नाउ closing stock. Yes, bad debts account. Provision for bad debts account. Now see, opening balance is 6,000. What is the opening balance? Buy balance brought down 6,000. To balance carried down. To balance carried down. You want 4% on debtors. So what is debtors balance? Debtors कितना है? 2,50,000. 2,50,000 into 4%. This is 10,000. And here two bad debts, actual bad debts. So this is a actual bad debts. So what is actual bad debts in this question? 12,000. And by P&L, 22 minus 6, 16,000. So in P&L, you are going to write 16,000. So P&L में RDD, other expense में you are going to write 16,000 instead of writing bad debts. And second effect, बेटा, one effect in account. First effect account में आएगा. Okay.
एंड सेकंड इफेक्ट, डेटर में से माइनस करके बताओगे, सेपरेट हेड, डेटर्स माइनस सेपरेट हेड, डेटर्स माइनस प्रोविजन. यस, सेकंड इफेक्ट. वन इफेक्ट इज इन अकाउंट, वन इफेक्ट अकाउंट में टू बैलेंस कैरिड डाउन. See, this is a trial balance item, so one effect. This is also from trial balance, and here you have to give two effects. Second effect in debtors, और इसका दूसरा इफेक्ट पी एंड एल में जाएगा. 16,000 का दूसरा इफेक्ट पी एंड एल में जाएगा, अदर एक्सपेंस. Second effect in other expense. Trial balance always has one effect, and other than trial balance, two effects. So one effect is in accounts, 10,000, and second effect of 10,000 deduction from debtors, and P&L के डेबिट में बताया जाएगा 16,000 other expenses. Depreciation, we will divide this. Depreciation P&L में दिखाया जाएगा separate items. So only one effect, trial balance item, 16 and 24. 16 and 24. Director declared dividend, beta ignore. Only note you will write. Transfer to general reserve 10%. So P&L appropriation. P&L appropriation वहां से माइनस होगा, P&L में से माइनस होगा एंड बैलेंस शीट में ऐड होगा जनरल रिजर्व में. And bill discounted not yet matured, only footnote. Only footnote, beta, bill discounted but not yet matured. So this question, now you can try this question. Please check the answer with ICI. Now it's very simple. What are two important concepts, beta? What are two important concepts? I already given you two important concepts, and you can check my answers. इंडेक्स में आप देखो, इंडेक्स में यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स. सी, इंडेक्स में मैंने अच्छे से दिया है. बिल्डिंग मशीनरी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, ए प्लस प्लस प्रॉब्लम है. रीजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन इन ट्रायल बैलेंस, ओनली वन इफेक्ट, पी एंड एल डेबिट. Loose tools under inventory. Purchases is given, is adjusted purchases. Finished goods का है वो. Now separate it, 580 and 160. So already मैंने ये बता दिया. Director fees, other expenses, director fees, other expenses. Interest accrued on investment, other current assets. Advance tax, short-term loans and advances. Provision for doubtful debts, beta account we are going to prepare. P&L in trial balance, opening balance as current year, nominal account are not yet closed. So P&L trial balance में जो है वो opening balance है, and provision for income tax आपको करना पड़ेगा. Dividend declared is notes to accounts में दिखाना पड़ेगा. And bill discounted B footnote में बताया जाएगा. Unclaimed dividend, other current liability. So all important points given in the index. I hope you enjoyed today's session. कुछ भी doubts नहीं है अभी. TYK5 also consider beta. Yes, are you getting this TYK5 now? TYK5 समझ में आया क्या अभी आपको? चलो जल्दी से बताओ. बताओ जल्दी. इजी है. चलिए, so here we have finished
with this chapter. अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा बेटा, इज वेरी सिंपल. अब्दुल भाई अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा, ये हुआ है क्वेश्चन. सो 6 नंबर आप खुद से कर लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए मैंने. सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे. डोंट स्किप दिस सेशन, प्लीज कैश फ्लो के बेसिक्स देख के आना. कैश फ्लो के बेसिक्स देख के आना इन नेक्स्ट सेशन प्लीज. इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. वी आर गोइंग टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जामिनेशन. सो इट्स माय रिक्वेस्ट, in these 2 days complete your cash flow statement, at least first basic session को complete कीजिए. Okay, so till that, thank you, bye bye, we'll meet on Wednesday. Thank you.